Well, next state we are going to talk about is the state of Assam. BJP that won last time with a historic margin, but what happens this time around, because it is literally the BJP versus the Mahajot in the state of Assam. Every topic that has now been discussed this time around, whether be it to infiltration, the NRC, even religious cards, that this time around has been playing a major factor between the BJP and the opposition. Who has the edge? Let's take a look. On August 2019, the BJP-led Assam government released its second NRC list. More than 19 lakh citizens were left out. Fast forward to March 23, 2021, in its election manifesto, the Saffron Party promises, quote-unquote, a corrected NRC. जनता खुश है, जनता शांति में है, जनता को ऐसा माहौल दिया गया है जहां जनता इज्जत से जीने के लिए उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है. So if 5 states are going to election, why is BJP in one state's manifesto they're putting CA and in another they are not? That means they want to trick the people of Assam. The BJP has gone all guns blazing with its traditional two-pronged attack on the Mahajot. One, by promoting its development agenda for Assam. Two, by attacking the Grand Alliance. मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा समाप्त करना नहीं चाहती. कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद समाप्त करना नहीं चाहती. कांग्रेस पार्टी कभी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती. मित्रों, ये तरुण गोगोई आसाम के सीएम हुआ करते. वो बदरुद्दीन अजमल के लिए ये कहते थे, हुई बदरुद्दीन, और आज राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान. मित्रों, इससे हमें बाहर आना है. But Congress leader Rahul Gandhi, during his visit to Kamakhya Devi temple, said that his party is not like the BJP. हम 5 गारंटी दे रहे हैं. सबसे पहली गारंटी कि हम CAA के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे. दूसरी गारंटी, असम में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे. सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के आपको देंगे. तीसरी गारंटी, 200 यूनिट बिजली का हर परिवार को हम मुफ्त में देंगे. चौथी गारंटी, 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी. और 5वीं जो गारंटी थी, जो आपके लिए सबसे जरूरी गारंटी है, 365 रुपीज आपके जेब में गारंटी करके हम डालेंगे. Even polling was flooded by the murky waters of politics after a video surfaced on social media showing EVMs being found allegedly in a BJP candidate's car in Patharkandi constituency. 4 EC officials were suspended and repolling was ordered. There have been several headlines from the state of Assam in election year, from the issue of development of tea workers in the northeastern state and the Bodo Peace Accord. देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त. To citizenship and Assam's identity. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सब लिखा रखा है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा.
Assam election is also a civilizational battle. We are fighting this battle since 1935. I am not talking about the context of India. Assamese people are fighting this battle, and we are living in this art by fighting this battle. So for us, certain things are very crucial, and we need to do that. May 2 is Judgment Day for Assam. Will BJP's development agenda earn it a second consecutive term, or will Mahajot's 5-point guarantee scheme restore its lost legacy? And so this manifesto provides 5 guarantees, but it also provides a guarantee that we will defend the idea of the state of Assam, the harmony in Assam, the traditions, the language and the history of Assam. ये चुनाव महाजोत के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। एनडीए हर सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए आज जी जान से जुटी हुई। Bureau Report, Republic TV.